So and obviously recording also start, and the main important thing is that आज अभी का जो क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा उसका मैं तुम लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी भेज दूंगा. So don't worry about the note. If you want to write some information, you can write it. Okay. And one more thing, कभी कभी इस हेडफोन में वॉइस सुनाई नहीं देता है. So if you have this type of question, you just raise your hand. I can see it here, or you can type also, sir, your voice is not clear. So on that basis, I can try to fix it. So let's start. Motion under gravity. So obviously you understand, as we write it here, motion under gravity, that means gravitation is involved here. Gravitation is involved here. So before we start gravitation, motion under gravity, we know basically three formula. This three formula is very, very important formula. First one is V equals to U plus AT. Second one is S equals to UT plus half AT square. Third one is V square equals to U square plus 2AS. So these are the three formula we can use. And one more thing, if you know little bit about the vector, so what happened in vector, we have a particular direction. So on that basis, we can say these two are the vector also, means these are the vector form, but here you have the square form. So actually it's the vector, but in the product form, and the product is a scalar quantity, means directly or indirectly we can say, if we put the value in this equation, we only get the magnitude, and in this one, this two, we can get magnitude as well as direction. Now in all these three equation, 1, 2, and 3, we have overall 5 variable. U means initial velocity, V is the final velocity, A is the acceleration, which is always constant, and then we can use this three formula. S is the total displacement, T is the time. Total you have 5 variable, and in each equation you have 4 variable. Like in the first equation you have VUAT, in the second equation you have SUAT, and in the third equation you have VUAS. So in all equation you have 4 variable. Overall you have 5 variable. Examiner at least given you 3 variable. At least they given you. If they given you less than 3 variable, then it is not possible. So Boshachi, please. So in each equation you have 4 variable, total 5 variable is there, and examiner gives you at least 3 variable. This is the thing which we already discussed in previous class. Here the one more important thing which I want to add, that these all are the equation of one dimension, means motion in one dimension. What do you mean by motion in one dimension? They are straight line. So motion in straight line means either it's x-axis or it's y-axis. Means either the motion in x-axis horizontal or the motion in y-axis, and if you combine them like this one, so you have the motion along x-axis as well as you have the motion along y-axis, then this one is called the motion in 2 dimension. But still now we are in 1 dimension, and in 1 dimension, why it's 1 dimension? Dimension matlab ek direction, one directional. So the motion is one directional, means 1 dimension. So here in this, especially in this motion under gravity, you have 2 parts. One is the motion in 1 dimension, another part is the motion in the 2 dimension. First we discuss about the motion in 1 dimension. And one more important thing, that is the you can say sign scheme, or you can say in terms of convention, we can start from any point. The point from where we start, that is our observation point. If we move upward, or if our direction is upward, we write positive value. If our direction is downward, we can write negative value. If our direction is right side, we can write positive value. If our direction is left side, we can write negative value. So देखो ये जो convention है SL Arora में, for example, SL Arora में in some in case of such circumstances, they don't use this. They use in that way कि downward motion is positive.
So if they use downward motion is positive, and in that time they use this, all are positive value. But when they solve numerical, they use this my method. Okay, during the upward is positive, all upward is positive, all downward is negative, because in that time it takes a small means you can solve it 2 or 3 lines, otherwise it takes 10 or 20 lines. But when they solve the theory, they use their own method. So it's better we use the same method, that you can understand it also in very easy way, and you can understand, or you can able to solve the numerical also in very simple manner. So that we have to kept in mind. Yes, yes. Sir. Okay. So first thing is that, suppose this one is the ground. Listen properly. Okay, everyone listen properly. This one is the ground, and from the ground we project a particle with initial velocity u, so that it will be like, look like this. Suppose we project from this one and it will moving like this. So what happened, it will be moved this upward, and then for an instant it will be rest, and then moving down. So it moving up, and then when it is moving up, the retardation or acceleration is acting downward. So it will try to decrease the velocity, and then it achieve the maximum height. Then its velocity is 0. Now due to the gravitation, which again continuously acting downward, it will be moving down. So in SL Aurora, what they do, or in even in school, or even so many teachers follow that one, they frame it in different way. Upward motion different frame, downward motion different frame. So for upward motion, they use when it is moving upward, retardation, acceleration is moving down, they take negative, and when it is moving down, so they take all these things are positive, because it is supporting the motion. But we are not doing in that way. What we are saying, all the upward motion is positive and all the downward motion is negative, and you get the same answer. Let's see. So we are projecting a particle with initial velocity u. So what happened, it will be moving up, and velocity is decreasing. Suppose at this point the velocity is 0, so we can say this one is the highest point where the velocity is 0. And now again it will be coming down, and actually the path is straight line, means it will be actually the same path. But to understand you in better form, we move it in the next line, but actually it is in the same line, because otherwise it's not a straight line. এটা একই লাইনে কিন্তু থাকবে, ये एक ही लाइन में रहेगा, otherwise ये straight line नहीं हुआ, motion in one dimension नहीं हुआ. लेकिन हम लोगों को समझने के लिए मैंने इसका लाइन को चेंज किया है, ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि हो क्या रहा है. So in all this case, acceleration is acting downward, and here this one is the y-axis. So for y-axis we can use y. What do you mean by y? Y here indicate that the vertical component. And what do you mean by x? X means horizontal component. So now one more important thing is that the same gravity, it will try to move it up, and the same gravity it will try to move down. So at any point, this is a very important thing, at any point, if you find out the magnitude is same, but direction is different. Let this one is V1. So magnitude is same, V1, but the direction is, this one is up, this one is down. Here say let it be V2, V2, V1, V3, V3, and at the highest point it is V0. So we have to find out so many things, like first of all, we have to find out this height. That height is called the maximum height. So my first heading is maximum height. We can write it also H max. H max means maximum height. So see, you know the initial velocity, you know the final velocity, you know the acceleration due to gravity, and you have to find out the height. So according to, as I promise you,
in each equation, in each to solve any type of this type of question, examiner must given you 3 values. So they given you u, initial velocity, they given you the final velocity g, 0 at the highest point, and they given you the acceleration, and so 3 things are given. So I am absolutely right till now, and you have to find out the height. So among these 3 formula, which formula you have to use? First you tell me. Anyone tell me. Third one. Don't say first, second, equals third. to u square plus 2s. Yeah. Yes, I want to know that one. Very good. So we can use v square equals to u square plus 2as, and here we use the sign y. You can, if y जो यूज किया मैंने, तुम लोग नहीं भी यूज कर सकते हो, पर मैं यूज करता हूं बच्चा लोगों को समझाने के लिए, मेरे को भी अच्छा से समझ में आए. What do you mean by this y? You are choosing the vertical component. Okay, so y means which component? Vertical component. Okay, so we are writing here y means vertical component. So at the highest point, the velocity is 0. Initial velocity along the y-axis is how much? Initial velocity along the y-axis is u. Now plus 2. Acceleration due to gravity, which direction? Up or down? Down. Always down. So what we write here? Minus g. Acha, u up or down? Up. Up. So positive. And what you have to write? H max. So we can move it in that side. Sorry, u square. So 2g h max is u square. So h max is u square by 2g. Is it okay for everyone? And examiner can ask you to find the maximum height. So you can easily find out the maximum height. Even now they can give you the objective type question also, means they can give you multiple choice. So you understand what you write here, u square by 2g maximum height. If you project a particle vertically like this, okay, not like this. ये दोनों का मतलब समझा? एक को मैंने ऐसे उड़ाया और एक को मैंने ऐसे उड़ाया. ये जो ऐसे उड़ाया, that is called projectile. That is the next topic. अभी आज हम लोग डिस्कस नहीं करेगा. आज हम लोग one dimension सिर्फ vertical वाला देखेगा. So up to this, is it okay for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So when we get the maximum height, one more thing, can we find out? Sir, I can't hear your voice. Time taken from here to here? So you are not audible. Sir, yes, sir. Sir, I can't hear your voice. Find out. How much time? How we find out the time taken to move it from here to here? That is the maximum height. Can we find out it? Which formula we use? V equals to u plus at. Very good. So we can use Vy equals to uy plus ayt. Now from here to here, the time is called the time of ascent. मतलब ऊपर जाने के लिए जो time लगा, that is called the time of ascent. So final velocity 0, initial velocity time तो time होता ना, time is not the direction ना. Okay. Time is a scalar quantity, beta. G into time. Okay, you can write it here. Time of ascent. Time is a scalar quantity. Time का direction होता तो मेरे तरफ तो आने ही नहीं देता. So this is the time of ascent from here to here. It will take that one time. So now when you get this one, you can use this one also. Sy is uyt plus half ayt square. And see, if we use this one, we can get this one. See, we have to find out h max. That is u into time, u by g plus half minus g into t. What do you mean by t?
u by g ka whole square. So what you have, u square by g minus u square by 2g, that is u square by 2g, and that h is what? H max, na? Yes, sir. Are you getting my point? Indirectly we find out. So this one is not that much important, because indirectly we find out that is the best one we can directly put, and we get the value of maximum height. After maximum height, the next important one is time of flight. So examiner means specially in school ऐसा questions और कहीं पे नहीं पूछेगा, कोई teacher definition ज़्यादा पसंद करता है. So they can ask you, what is the definition of time of flight? So time of flight is defined as time taken by the object before coming to ground or before hitting the ground. मतलब जब तक सपोज ये मेरा ग्राउंड है, इधर से उड़ा 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 आया 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 ए, तो ये ए के पहले तक ये क्या हुआ? फ्लाई किया. फ्लाई मतलब क्या? उड़ना. तो कब तक उड़ा? दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट. सो टाइम टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट is called the time of flight. So time of flight, my next topic is Sir, can you repeat the definition? Time of flight माने जब तक वो उड़ा. तो you can explain it in your word कि अब time taken by a particle or object before hitting the ground is called time of flight. টাইম যেটা লাগছে গ্রাউন্ডে আসার আগে সব পর্যন্ত, মানে এটা মনে কর গ্রাউন্ড, এখান থেকে গেলি এই উড়লো 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 এলো, তো আসার আগের পর্যন্ত টাইম. ফ্লাই যতক্ষণ করবে that time is time of flight. Is it clear? Yes, sir. Elephant. Yes, sir. Yes. So time of flight. Time of flight. So now see, we can solve it in so many methods. Let me start with the method 1. So from here to here, the time we already find out, that is called the time of ascent. So we can write it again. Vy equals to ui plus ayt, final velocity 0, initial u minus g into time of ascent. So time of ascent is u by g, and यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगा वहां से यहां आने में सेम टाइम लगेगा. मतलब नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा पार्टिकल के लिए. पर हम लोगों के लिए हम लोग इंसान लोग एक बार ऊपर चला गया तो कभी वापस नहीं आता. बट हियर फॉर द पार्टिकल द टाइम ऑफ ascent एंड टाइम ऑफ डिसेंड. डिसेंड मतलब नीचे आने का टाइम और ascent मतलब ऊपर जाने का टाइम. तो यहाँ पे because you are starting, your initial and final points are at the same point, so time of ascent and time of descent are equal. So what you can say, time of flight, that is time of ascent plus time of descent, that is u by g plus u by g. So what you can write, 2u by g. That is your time of flight. This is the first process. The second process, what we can write, see method 2. You can use any process to find out time of flight. The second process is that Vy equals to ui plus at. So if this is your initial velocity and this one is your final velocity before hitting the ground, and what I'm saying ki in all height the velocities are same. So if this is your initial velocity u, so what is the velocity before hitting the ground at the same height? What is the velocity? What is the magnitude of the velocity? Anyone tell me? U. Upward or downward? Downward. Excellent. So you can write minus 2. আরে এটা আপওয়ার্ড এটা ডাউনওয়ার্ড, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস?
Before hitting the ground, the second method ये गया फिर वापस आया. So before hitting the ground, the velocity is minus u. Initial velocity is upward, plus or minus? Minus. Plus or minus? Plus. 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 Acceleration due to gravity, up or down? Down. Acceleration due to gravity, always down. Very good. And TF is the total time of flight. So see, if you move in that side, G into TF, this U is moving that side, U plus U, 2U. So time of flight is 2U by 0. So you get the same answer, time of flight. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now you can use one more method to find out the time of flight. Which one? See. We can say this one, method 3. Method 3. So in this method, just tell me, if a particle moving from this point and coming back to this point, what is the displacement along the y-axis? 0. 0. 0. Excellent. Excellent. 0. So what we can write? Sy uyt plus half ayt square. So displacement along y-axis is 0. Initial velocity is upward. So u and time you have to find out, plus half minus gt square. And I can tell you this one is the best method. Why? It's not necessary that you can project it from here. You can project it from here also. ये ऐसा गया, फिर ऐसे नीचे नदी में गया. ऐसा भी तो हो सकता है. Let this one is 20 meter. So, if the first one you don't get the answer. If you use the second method, you don't get the answer. But this is the only way you can answer the question. After this we can try this one. So what happened if we take t common, u minus half gt equals to 0. अब देखो दोनों का multiplication is 0. दोनों का this one into this one is equals to 0. टाइम कभी भी 0 नहीं हो सकता है. टाइम कभी भी 0 नहीं हो सकता है. तो 0 कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है. So we can write u minus half gt equals to 0, half gt equals to u, t equals to 2u by g. So this one is our formula, t equals to 2u by g. So this time is again time of flight. Are you getting my point? Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the three method by which we can find out the time of flight. Now, on the basis of that, examiner sometimes gives you draw the graph. So we can try them. First, they can say you draw velocity versus time graph. So initial velocity is positive or negative? So positive. Positive. And how much is the value? 0. Oh, sorry, u. U. And the formula is V equals to U plus AT, or U minus GT, because the gravitation is downward. So initially the velocity is decreasing, and at the highest point velocity is 0. You can say this point is time of ascent, which you can write U by G also. Now velocity is moving. What do you mean by velocity? Direction. So up to this, the direction is positive. Now it is moving up or down? Down. So direction is positive or negative? Negative. Very good. So you can move downward. And before hitting the ground, the velocity is minus u. And the total time taken is called the time of flight, 2u by g, and that is time.
So this one is called velocity time graph, but examiner sometime तुमसे क्या करेगा, तुमसे नटखटगिरी करेगा. So वो instead of velocity वो बोलेगा speed. तो तुम्हें क्या करना है, 0 and then this, because speed never negative. Are you getting my point? Yes, sir. Clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Because speed never negative. So they can ask you velocity time graph. In fact, ये question एक बार IIT में भी पूछा था, IIT मेंस में. They can ask you velocity speed time graph. Now, if they ask you acceleration time graph, so acceleration is constant, and here we suppose the acceleration is negative because downward. And they can ask you displacement time graph. They can ask you displacement time graph. Don't write distance. Displacement time graph. So initial displacement is 0, final displacement is 0, and the equation is ut minus half gt square. So in terms of time, it is a quadratic equation. And whenever you have quadratic equation, the shape is look like parabola. So how it look like? It look like this. And this is the maximum height. You can write h max. This is the maximum height. Hope you understand which one is maximum height. And this is the total time of flight. So this one is the displacement time graph. If anyone asks you the distance time graph, can you write it here? Is it visible? Yes. So after this portion, distance displacement can be negative, but distance never negative. So just mirror image. So what to do? ये आया, अब इसका क्या करना है, mirror image. ये जो था डॉटेड लाइन मतलब नहीं है कौन सा, ये वाला. So ये हो गया distance. Sir. Yes. Sir, শুনতে পাচ্ছো? Sir, আমার নেট কানেকশন 100% হয়ে গেছে, তো আমি ঠিকঠাক ক্লাস করতে পারছি না. कि 100% होएगा, बच्चा को समझ में आए. एंड सेकंड थिंग, ये लोग बच्चा मतलब 9 से पढ़ रहा है कि जब भी नीचे वाला मोशन है पॉजिटिव मान लो, तो वो लोग क्या करता है, नीचे वाला को द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव मींस ये क्या कर रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है या वेलोसिटी को बढ़ा रहा है. सो दे यूज ऑल दिस पॉजिटिव, दे यूज द डाउनवर्ड इज पॉजिटिव. लेकिन जब तुम आईआईटी का क्वेश्चन करने जाओगे, दे वांट कॉन्सेप्ट फ्रॉम यू. डाउनवर्ड इज नेगेटिव, सो दे गिव यू ग्राफिकल थिंग. सब पॉजिटिव करके आता है, सब का सब बर्बाद हो जाता है. दे ऑल आर अवॉइडेड -1. सो याद रखना, देखो हम यहाँ से अगर हम यहां से शुरू करें अपना मोशन, सो नीचे की तरफ गया है, तो मानो ये हाइट h है. सो अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें ये पॉजिटिव है, अगर ऊपर के रेस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, नेगेटिव है, नीचे की तरफ गया है. And initial velocity is 0. Why initial velocity is 0? Because you are releasing. What is the velocity of the pen? 0. So you understand, when you just release. So that is called the initial velocity of the thing is 0. And if we know the height, and we also know acceleration due to gravity, downward always negative because it's downward. So what we have to find out? Suppose we have to find out the time taken or time of flight. Time of flight. So we have an initial velocity, we have height, we have acceleration, and we have to find out the time. Which formula we can use? So S equals to ut plus at square. Excellent. Minus at square. Excellent. We can use sy uyt plus half ayt square. Now see, you are moving down. So down is plus or minus? Minus. Minus h. So we use minus h, 0 plus half minus g time of flight square. Minus minus we can cancel. Yes, sir. So what happened? Time of flight is
2h by g, time of flight is root under 2h by g. यही चीज एसेलेरोरा लोग क्या किया है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो वो बोल दिया है डाउनवर्ड मोशन इज पॉजिटिव, इसको ले लिया प्लस. तो ये रॉन्ग नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ रॉन्ग है, लेकिन व्हेन यू सॉल्व न्यूमेरिकल, इफ यू गो थ्रू दिस वन, सो देन समटाइम यू आर इन प्रॉब्लम. थ्योरी का क्या है, थ्योरी को तुम किसी भी मेथड में कर दो, लेकिन व्हेन यू गो थ्रू द न्यूमेरिकल यू आर इन प्रॉब्लम और यू टेक मच टाइम. तो दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि कोई जरूरत ही नहीं है हम लोग पूरा फॉर्म को याद रखेंगे. डाउनवर्ड जाएगा तो सब पॉजिटिव, नेगेटिव, अपवर्ड रहेगा तो सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएगा तो सब नेगेटिव, राइट साइड जाएगा तो सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएगा तो सब नेगेटिव. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. सर एस्टा माइनस केन हलो सर? Downward, you are moving. This one is your reference and you are moving which direction? বুঝতে পারলি আমি কি বললাম, যেখান থেকে আমার স্টার্ট হবে, আমার স্টার্ট এখান থেকে হচ্ছে, আমি এটাকে রেফারেন্স ধরেছি. যদি কোশ্চেনের ডিসটেন্স যদি হচ্ছে স্যার বলে দেয় তাহলে? দেখ না আমি তোকে কোশ্চেন দিচ্ছি তোর পরে. ডান ডান. यस सर. Now they can ask you velocity before hitting the ground. Let it be v. So you have two options. One, now you know the time and you have the height. So you can use both. You can use any one, but you get the same answer. Let's try. We know the initial velocity. We know the height. We know the motion under gravity. And we have to find out final velocity before hitting the ground. Which formula we can use? बोलो बोलो. Sir, v square equals to u square. Yes, vy square uy square plus 2ay sy. So now tell me, what do you mean here? What do you mean by y? सर वर्टिकल. Along the Very y-axis. Very good. So you have to find out the final velocity vy. Initial 0 plus 2. Acceleration due to gravity up or down? सर डाउन माइनस जी. Minus g, and h is also minus g. Why it is moving down? So what you have, vy square equals to 2gh. Vy is root under 2gh. And you get the magnitude only. Why? Because only this one is your magnitude form. Means you never get the direction. But if you use the time, like same question, if we use this y, vy equals to uy plus ayt. See, initial velocity 0 minus g into time of flight. So minus g, your time of flight is how much? Root under 2h by g. So what you get? Minus root under 2gh. What do you mean by this negative sign? सर Direction. डाउनवर्ड्स. Downward. Very good. तो देखो मेरा वाला मेथड का प्लस पॉइंट्स क्या है, तुम्हें डायरेक्शन में मिलेगा, किधर जाएगा. तुम रास्ता में खड़े हो, ऊपर से एक तो बेल गिरा, तुम्हारा सर पे गिरा, तो सबसे पहले तुम्हें जो महसूस होगा किधर, नीचे की तरफ गया रे, समझा. सो डाउनवर्ड नेगेटिव साइन. ठीक है. नाउ I give you one question, then you understand why this negative sign is necessary or required. Okay. See, suppose from a building, okay, let the height of the building is 100 meters. You are projecting 3 particles. First particle U1, you are projecting with velocity 10 meters per second upward. Second one, you are projecting 10 meters per second downward. And third one, you just release it. Find the time taken for each particle.
coming back to ground. Just tell me fast. I give you 3 minutes for that. देखो मैं मोशन बता देता हूँ. पहला वाला ऐसा जाके ऐसा आएगा, दूसरा वाला डायरेक्ट आएगा, तीसरा वाला भी डायरेक्ट आएगा. So tell me. Time taken to find out the. Okay, I give you one more help. Acceleration due to gravity is 10 meter per second square. ताकि तुम लोगों को लेने में जल्दी हो. I give you 5 minutes for that. Fast. Okay. Whenever you want to find out the time, best process is use this one. If you don't know formula, don't remember also. Formula याद ही मत रखो. You just use this formula. So let's try for the first one. See, we start from here, okay, and we are moving downward. So यहाँ से नीचे ही ना आएंगे. जितना भी ऊपर जाए, जिधर भी जाए, last में इसको नीचे ही आना है. So this S is the displacement. This is the initial point. This is the final point. What is the definition of displacement? The definition of displacement is the shortest distance between the initial point and the final point. So you are moving basically downward. Okay, you are moving basically downward. And as you are moving downward, so for the first one, you write -100. Now in the first question, you project the particle U up or down? Up. So plus or minus? Up. Plus. Plus or minus? 10. T, you don't know T, you have to find out T. Half. G is always downward. अगर gravity downward के जगह पे upward लगे, तो हम सब उड़ने लगेंगे. So -10 T square. So what we can write? 10T minus 5T square. So हम लोग इसको -20 equals to 2T minus T square we can write. So T square minus 2T minus 20 equals to 0. Now we all know Sridhar Acharya. So what is the formula? Minus B means 2 plus minus B square. B square means 4. B square minus 4A into C by 2 into A. So what we have? 84. 84 by 2. That is 2 plus minus 2 root 21 by 2. अब देखो, time never negative. So what we can write? 1 plus root 21 second. Whatever be the answer, you can write this one for the first one. Time 1. Is it clear? For the first one? স্যার এসটা মাইনাস কি করে আসলো স্যার? আমার না একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম. দেখ, তুই এখান থেকে ফেলবি. হাইটটা কত? 100 মিটার, তাই তো? উপরের দিকে ফেলবি. উপরে গেল, গিয়ে এই হয়ে নিচে আসলো. সো এটা ইনিশিয়াল পয়েন্ট, এটা ফাইনাল পয়েন্ট. উপরের দিকে গেলি না নিচের দিকে গেলি? নিচের দিকে. ইনিশিয়াল আর ফাইনাল দেখ. নিচের দিকে গেলি তো? So নিচের দিকে গেলে প্লাস লিখবি না মাইনাস লিখবি? মাইনাস. That's it. Now the second one. In second one, we are projecting the particle downward and it is moving downward. So -100. Your initial velocity, second one, up or down? Down. So down. So you write plus or minus? Minus. -10. Let it be T2 because the first one is T1. You write here plus half -10 T2 square. So minus you can cancel. This is 100 equals to 10 T2 plus 5 T2 square. So what you have? You have 22 T2 plus T2 square. So T2 square plus 2T. T2 minus 20 equals to 0. So T2 is equals to -2 plus minus 4 minus 4 into -20 by 2 into 1. That is -2 plus minus root 84 by 2. That is -2 plus minus 2 root 21 by 2. Time is never negative. So plus root 21 by 2. That is -1 plus 21 second. This is the second one. Is it clear?
Yes, sir. Now the third one. I'm trying to write in that portion. Sy is uy. We can use the same formula. So minus 100. Now for the third one, what is the initial velocity? 0. 0. 0. Plus half minus k into t square. This minus minus cancel. This 0 0 also cancel. T square is 20. T is root under 20 second. You can write it. t3. Is it clear? तो देखो मेरा नेगेटिव वाला लेके ही हुआ ना. अगर मैं पॉजिटिव वाला लेता, यहाँ पे देखो ऊपर वाला का अलग से निकालता, नीचे वाला का अलग से निकालता. एसएल अरोड़ा जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है यही वाला डायरेक्ट लगा रहा है, लेकिन जब थ्योरी सॉल्व कर रहा है बोल रहा है अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज अपवर्ड के लिए एक्सीलरेशन को नेगेटिव लो, डाउनवर्ड के लिए एक्सीलरेशन को पॉजिटिव लो. लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है देखना उसमें डायरेक्ट कर दिया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि वो जानता है बच्चा को थ्योरी समझ में आ गया, अब न्यूमेरिकल तो जैसे सॉल्व कर दो. लेकिन हम लोग क्यों करेगा वैसा? जब हम लोग सोच ही लिया है कि डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, हम लोग सब डाउनवर्ड पॉजिटिव लेगा. देखो यू गेट द सेम आंसर. इज इट क्लियर? एक और बात तुम्हें मैं दिखाता हूं. देखो ये ऊपर गया, जब ये नीचे आएगा यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या था 20, और जब ये यहाँ पे आया इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा -20. तो देखो ये ऊपर से गया नीचे आया, इसका और इसका अगर टाइम देखोगे दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 सेकंड का डिफरेंस है. देखो +1 एंड -1 ना है कि नहीं? बोलो. Yes, sir. 1 plus Yes, root sir. under 21 -1 plus root under 21. So the difference is 2 सेकंड. ये ऊपर से नीचे यहाँ तक आने में टाइम लगा इसका 2 सेकंड. इसका मतलब so that means this formula is auto adjusted क्योंकि it's a vector quantity. Yes. স্যার আরেকবার বোঝাবে, বুঝলাম না. আরে কিছুই না, এই ফর্মুলাটা যদি ইউজ করিস, দেখ এখানে যে টাইমটা পেয়েছিস আর এখানে যে টাইমটা পেয়েছিস, এই দুটো টাইমের মধ্যে দেখ 2 সেকেন্ডের ডিফারেন্স. এটাতে +1 এর -1, দুটোর মধ্যে 2 সেকেন্ডের ডিফারেন্স. তার মানে ফার্স্ট স্টেপটা যে এই গিয়ে যে ব্যাক করে আসলো, এই সময়টা হচ্ছে 2 সেকেন্ড. মানে 1 সেকেন্ডের উপরে গেছে আর 1 সেকেন্ডের নিচে এসেছে. তাহলে এইটা কি হচ্ছে? এই ফর্মুলাটা ইউজ করলে অটো অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে, তোকে বেশি ভাবতে হবে না. তুই জাস্ট ভ্যালু পুট কর উইথ দ্য ডাইরেকশন, বাস. क्लियर? यस सर. जो कि इवन आईआईटी वगैरह में भी पूछता है, if the downward motion is negative, so then all these are the negative, but here the downward motion is positive according to NCERT, according to SL Arora, they all use in that way कि downward motion is positive. So graph देखो negative वाला positive हो जाएगा. हालांकि free fall में when you project a particle from the ground, they use the upward motion is positive. तो ऊपर जाके तो वो नीचे भी आया, तो वहां पे 2 बार हो जाएगा, एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड. सो तुम्हें उस समय अलग से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. हालांकि एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, लेकिन वो लोग तब 2 ले रहा है, एक जब ऊपर की तरफ है तब वाला क्या, और जब मतलब when the one time it's a acceleration, another time when it is the particle is moving upward, the acceleration is actually retardation, but when it is coming down, this same acceleration is actually acceleration. उन लोग अगर ऐसे करके लोगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन अगर ओवरऑल ऐसे सोचोगे कि डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड, सो नेगेटिव. जैसे डाउनवर्ड मोशन के हिसाब से लेंगे, सो एक्सीलरेशन हमेशा माइनस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होगा. बिफोर हिटिंग द ग्राउंड v equals to root under 2gh. you can write negative sign also, and ये जो हो जाएगा तब ये मैक्सिमम से 0 पे आ रहा है, सो ये -h हो जाएगा, और ये टाइम इज रूट अंडर 2h/g. लेकिन कभी कभी जैसे लास्ट ईयर डीपीएस में भी एक क्वेश्चन दिया था कि a particle is projected from the ground, and coming back to the surface, इसका एक्सीलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करो. सो देखो एक्सीलरेशन का ग्राफ इन द सेंस पार्टिकल का बोल रहा है, नॉट द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोल रहा है. सो पार्टिकल में इनिशियली क्या हुआ, इट विल बी मूविंग व्हेन इट इज मूविंग अप. सो एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? मुझे बोलो. रिटार्डेशन था. रिटार्डेशन को आप नेगेटिव मान सकता है. फिर ये जाके बैक आ रहा है, तो वो क्या हो गया,
रिटार्डेशन की जगह पे एक्सीलरेशन, पार्टिकल के रेफरेंस में बोल रहा है, वो ग्रेविटेशनल रेफरेंस में नहीं बोल रहा है। हम लोग ये वाला जो ले रहा है ग्रेविटेशन का रेफरेंस में बोल रहा है। तो अगर वैसा क्वेश्चन में वो बोले एक्सीलरेशन का ग्राफ क्या होगा, सो इनिशियली एक्सीलरेशन इज द रिटार्डेशन एंड देन एट द मैक्सिमम हाइट ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया प्लस। सो दिस वन इज टाइम ऑफ ascent, दिस वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये ऐसे करके लिख सकते हो। इज इट क्लियर? স্যার हाँ बोलो। না ঠিক আছে, ওই গ্রাফটা উপরের গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। हाँ আমি ওই জন্য ঘুরিয়ে দিলাম। ठीक है, ओके। lecture 3 and lecture 3 and lecture 4 are actually mixed, so lecture 3 and 4 you can write question number 10. It's a very good question, and this question again from H.C. Verma. A healthy young man standing at a distance of 7 meter from a 11.8 meter high building. So एक building है, कितना लंबा है, 11.8 मीटर, कुछ ज्यादा ही मल्टीपल स्टोर बना दिया है, कोई बात नहीं। a healthy young man, मोटा ताजा, कितना डिस्टेंस पे है, 7 मीटर डिस्टेंस पे है। sees a kid slipping from the top of the floor. देखो स्लिपिंग मतलब क्या, स्लिपिंग मतलब फिसल गया, फिसल गया मतलब कोई उसको फेंक नहीं दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन इज 0। ठीक है, किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर with what speed, assume uniform, should he run to catch the kid by the arm height 1.8 meter? इसने देखा कि ये बच्चा आ रहा है, उसने देखा ऐसे करके बच्चा आ रहा है और फिर मारा दौड़, दौड़ मारा, यहाँ पे आके इस हेल्दी ने बच्चा को ऐसे करके पकड़ा। कितना हाइट पे पकड़ा, 1.8 मीटर हाइट पे। तो क्वेश्चन है ये कितना जोर से दौड़ेगा, बट द कांस्टेंट स्पीड। सो वेरी सिंपल, देखो बच्चा ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 11.8 से 1.8 को माइनस कर दो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर 10 मीटर। 10 Which मीटर direction? Downward. So we can write SY is UIT plus half AYT square। 10 मीटर नीचे की तरफ आया, 0 हाफ -10 T स्क्वायर। तुम लोग चाहो तो डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव लेके भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा दिमाग में अगर रखोगे कि डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, so it will be helpful for you. Okay, so minus minus cancel, 10 even cancel, T square is 2, T equals to √2 second. So √2 second में बच्चा ने, हेल्दी यंग मैन ने बच्चा को पकड़ लिया। अब इस हेल्दी यंग मैन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 7 मीटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो S is UT, why? Because uniform। सो देखो अगर इस साइड को तुम पॉजिटिव लेना चाहो तो दोनों को पॉजिटिव लो, अगर नेगेटिव लेना है तो दोनों को नेगेटिव लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 7 मीटर U into √2। तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था लेफ्ट साइड नेगेटिव, सो बोथ आर नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव कट ही जाएगा। U is 7 by √2 meter per second। Are you getting my point? यस सर স্যার Yes। স্যার √2 সেকেন্ডে কি মানে বাচ্চাটাকে ধরলো? হ্যাঁ, √2 না সেকেন্ডের মধ্যে বাচ্চাটাকে ধরতে হবে, কারণ এখান থেকে বাচ্চাটার এখানে আসতে √2 সেকেন্ড লাগছে। হ্যাঁ। কোশ্চেন নাম্বার 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोला है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
मैं चाहूंगा इसके बाद तुम लोग भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे जो तुम लोग ये सब ट्राई करोगे। Question is question number 18. A person sitting on the top of a building, top of a tall building, is dropping balls at a regular interval of 1 second. तो देखो एक tall building में एक person बैठा है या खड़ा है। A person sitting on the top of a tall building, बैठा ही दो इसको, बैठ दिया। Building is dropping balls at a regular interval of 1 second. Find the position of the third, fourth and fifth ball when the sixth ball is dropped. तो देखो मैं ये जब सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप किया, उसका ठीक 1 सेकंड पहले फिफ्थ बॉल को ड्रॉप किया था, ठीक उसका 1 सेकंड पहले फोर्थ बॉल को ड्रॉप किया था, फिर उसका 1 सेकंड पहले थर्ड बॉल को ड्रॉप किया था, फिर उसका 1 सेकंड आगे सेकंड बॉल को ड्रॉप किया था, उसके पहले फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड बॉल, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फोर्थ बॉल, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज जस्ट ड्रॉप। तो सबके लिए इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सो फॉर द थर्ड पोजीशन ऑफ द थर्ड बॉल हम लोग क्या लिखेंगे? ut ac ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप किया है हाफ -10। थर्ड बॉल के लिए कितना टाइम लगा? बोलो सर 4 सेकेंड। 4 seconds. हाउ 4 सेकेंड? जब तुम सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, फिफ्थ बॉल के लिए कितना सेकंड हुआ? 1 सेकेंड। फोर्थ बॉल के लिए 2 3 थर्ड थर्ड बॉल के लिए 2 seconds. 3 seconds. So what you write? 5 into 9 minus 45 meter. What do you mean by minus? डाउनवर्ड। तो बॉल जब रिलीज करोगे ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे ऊपर और नीचे। अरे यार बॉल तुम ऐसे रिलीज करते हो, पेन ऊपर जा रहा है, पेन ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है? नीचे। पक्का ना? यस सर। थैंक यू। फोर्थ कितना सेकंड लगेगा? 2. -5 into 2 -10. -10 into 2 square. Sorry, minus -20 एंड फिफ्थ बॉल का क्या होगा? 0 हाफ -10 into 1 square. -5 हो जाएगा। What do you mean by minus? डाउनवर्ड। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, वो बैलून वाला क्वेश्चन मैंने दिया है क्या इसमें? बैलून वाला क्वेश्चन चाहिए। कहाँ गया बलून? बलून 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 कहाँ गया? बलून मिल गया, बलून बलून मिल गया। तो मैं आज यही 3 क्वेश्चन कराऊंगा एंड दिस वन इज आल्सो फ्रॉम एक्सी वर्मा। अभी जो बलून वाला कराऊंगा ये शायद एसएल अरोड़ा का क्वेश्चन है, और एसएल अरोड़ा भी मैंने जैसे कराया वैसे ही कराया, लेकिन थ्योरी में वो डाउनवर्ड को अलग अपवर्ड को अलग लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं। 44 क्वेश्चन नंबर। हाँ देखो, a balloon is going vertically upward with a velocity of 15 meter per second when it is at a height of 50 meter above. कितना मीटर above? 50 meter above. कितना स्पीड से जा रहा है? 15 meter per second. ठीक है। A stone is gently dropped. The stone will reach the ground in what time? तो देखो, मानो राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन में रुका हुआ है, तुम जेंटली उतरा, कुछ होगा? अरे यार बोलो तो। राजधानी एक्सप्रेस रुका हुआ है, तुम जेंटली उतरा, कुछ होगा? नहीं सर। No sir. राजधानी एक्सप्रेस 100 का स्पीड में जा रहा है, तुम जेंटली उतरा, क्या होगा? सर जेंटली कैसे उतरेगा? Accident. हाँ? Accident.
एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं पीछे बचेगा। के तरफ, पीछे के तरफ। जेंटली बूता सर, मतलब डायरेक्ट वो ऊपर वक्त से चला नहीं जाएगा। है, गेटवा से, गेटवा बाहर की तरफ, ठीक है। वो जो जिससे तुम उतर ट्रेन में चढ़ते हो ना, वो गेटवा से जेंटली तुमने उतरा। कब? व्हेन द राजधानी एक्सप्रेस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हारा क्या होगा? तुम नीचे नहीं, तुम ऊपर उठ जाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्यों क्यों ऊपर उठ जाओगे? बोलो। अरे तुम लोग कितना Sir. टाइम लगाता है? कितना है? 100 किलोमीटर पर आवर। Similarly, when the stone is gently dropped, what is the initial speed of the stone? 15 meter per 15 meter per second. second. Up or down? Down. Down. अरे यार, बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टोन को रिलीज किया, वो डाउन जाएगा। इनिशियल स्पीड किधर होगा? बैलून की तरफ ही होगा ना। सर आप अरे तुम राजधानी एक ट्रेन पे हो, तो ट्रेन जिधर जाएगा तुम्हारा उधर ही मोशन होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा? कुछ बोलता ही नहीं है कोई। सर वही डायरेक्शन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, सेम डायरेक्शन, सेम सेम डायरेक्शन। अरे यार, हाउ इज इट ओके? सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन 15 meter per second upward. Why? Due to inertia, because the balloon is moving upward with the same velocity 15 meter per second. So what you write? sy uit plus half ayt square. अब देखो, स्टोन ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। So this is the initial, this is the final. तो फाइनली किधर आएगा? नीचे ही ना आएगा। यस सर। हाँ? So displacement Yes, up or down? सर डाउन। So plus ना Minus. minus? समझ में Minus. आया? तो मैं negative. बोलना, मेरा वाला तरीका यूज करो, सबसे आसान है। 15 into time plus half, g always negative, 10 t square. So 15 एक into sir. minus 5, 10 3t minus t square. So t square minus 3t minus 10 equals to 0. 3 plus minus b square minus 4 into a into minus 10 by 2 into 1. So 3 plus minus 49 by 2. 3 plus minus 7 by 2. Time कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। 3 plus 7 by 2, that is 10 by 2, that is 5 seconds. Is it okay? yes sir, Yes sir. Yes sir.